पिछले साल हुए हरियाणा इलेक्शन में अलग अलग 22 लोगों ने वोट डाले हुए थे। आईडी कार्ड अलग अलग, फ़ोटो सेम थी। वो मॉडल ब्राज़ीलियन लैरिसा थी। उसके बारे में राहुल गांधी सर ने चोरी पकड़ ली। और क्या आज का कहता है राहुल गांधी सर, चलो देखते हैं हम राहुल गांधी सर का ये शॉर्ट्स। In Haryana, and she votes in 10 different booths in Haryana, and she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हर महीने मिलेंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। At a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevan. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. The particular woman that Rahul Gandhi was talking about, the Brazilian model, she's spoken out now. The woman has been identified as Larissa. She says an image which was used during Rahul Gandhi's press conference is an old stock photograph, and she said have nothing to do with politics. She's also added that she's now a digital influencer and says that she has never been to India ever. जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, मतलब आप देश को टारगेट कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत से ताकतें हैं, आप लोग अभी व्यतीत है, मालूम है। देश में कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर, वो राहुल गांधी का एक मोहरा बना करके उसको यूज कर रहे हैं कि भारत का जो उभरता हुआ ताकत को, हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। And it is pretty clear to us that now this is a system. This is something that has now been industrialized, and it can be used in any seat, and it is going to be used in Haryana. And I'm confident that after the Haryana elections we will get the same records and we will show you that the same thing has happened in Haryana. You might in Bihar. You might be asking, oh, but how come you didn't see these anomalies in the voter list? Because the voter list comes at the last minute. Because the voter list is given to us at the last minute before the election. So this is a systematic method that has been evolved by the Prime Minister, by the BJP and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy.